Good evening viewers, you are now watching Hornbill TV's Prime Time. Suspected militants torched several Kucha houses in Manipur's Kangpokpit district on Monday afternoon, triggering fresh tensions in the hill areas of the state. According to officials, armed militants carrying sophisticated weapons set fire to unoccupied houses and other structures at Lokchau Ke Songlang village. The extent of damage is yet to be ascertained. An officer said that security forces including Assam Rifles rushed to the area following reports of the arson incident, adding that the situation is being closely monitored. Meanwhile, the Zeliangrong United Front claimed responsibility for burning farmhouses and farms in the Wapong area of Songlang village. In a statement, the outfit said that the action was part of what it termed a decisive campaign against illegal poppy cultivation, narcotics trafficking and alleged unlawful encroachment by illegal immigrants in areas it described as the ancestral territory of the Zeliangrong Inpui Naga people. ZUF further alleged that those involved in illegal poppy cultivation had ignored warnings and continued activities that it claimed threatened public safety, indigenous land rights and the future of the region. Officials said further details would emerge after security forces complete ground verification. Nagaland's tableau during the Republic Day celebration highlighted the Hornbill Festival as a vibrant celebration of the cultural heritage, tourism and community-driven self-reliance, reflecting the spirit of Atmanirbhar Bharat in India's northeast. Nagaland's tableau also conveys a message of unity, resilience and collective progress, affirming that when culture becomes a source of livelihood, self-reliance naturally flows. Through the Hornbill Festival, the state showcases how tradition, tourism and community participation together can build confident, sustainable and empowered societies in the line with the essence of Atmanirbhar Bharat. At the center of the tableau stands the majestic great Indian hornbill, presented with refined symbolism to represent cultural guardianship and also ecological balance and the aspiration of the people of Nagaland. The hornbill signifies how responsible celebration of culture and nature can become a lasting source of dignity, livelihood and pride. Through rich colors, tribal motifs and dynamic cultural expressions, the tableau illustrates the Hornbill Festival's evolution into a model of self-reliant tourism. Artisans, weavers, farmers, performers, youth entrepreneurs and local communities are shown as active participants in an ecosystem where crafts, textiles, music, cuisine, hospitality and creative enterprises generate sustainable economic opportunities. The narrative highlights youth empowerment, revival of traditional skills and eco-cultural sustainability, demonstrating how heritage-based tourism reinforces identity while fostering inclusive growth. Nagaland's tableau presents the Hornbill Festival as a vibrant expression of culture-led tourism and community-driven self-reliance, reflecting the spirit of Atmanirbhar Bharat in India's northeast. President Draupadi Murmu on Monday conferred India's highest peacetime gallantry award, Ashoka Chakra, to Group Captain Subhanshu Shukla, who created history by becoming the first Indian to set foot on the International Space Station. The President presented the award to Shukla at the Republic Day celebrations at the Kartavya Path, the centerpiece boulevard of the national capital. In June last year, Shukla became the second Indian to have gone to space and the first to visit the ISS as part of the historic AX-4 mission, and his 18-day space odyssey came 41 years
after cosmonaut Rakesh Sharma flew aboard to Russian Soyuz 11 space mission. As a fighter pilot, Shukla has an impressive record of 2,000 hours of flight experience across various aircraft, including the Su-30 MKI, MiG-21, MiG-29, Jaguar, Hawk, Dornier and An-32. Shukla served as pilot for the AX-4 mission to the International Space Station and left an indelible mark on India's remarkable advancements in human space exploration. The AX-4 mission was executed by US-based private firm AX Space and it involved NASA, European Space Agency and the Indian Space Research Organization. Group Captain Shukhan hails from Lucknow and he was commissioned into the fighter stream of the Indian Air Force in June 2006. अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। A spectacular cultural display unfolded among the Kartavya Path in the heart of India's capital as part of the 77th Republic Day. The celebrations on Monday with around 2,500 artists performing a choreographed mixed dance to the tune of Vande Mataram. The performance was a key feature of this year's parade, marking the 158th anniversary of the iconic national song. Prime Minister Narendra Modi watched eagerly as performers dressed in vibrant attires representing various states and cultural traditions presented India's cultural richness and unity. The dancers showcased folk and classical forms from across the country in tribute to the enduring legacy of Vande Mataram, first written by Bankim Chandra Chattopadhyay in 1875 and later adopted as the national song. The theme of parade, Swatantrata Ka Mantra, Vande Mataram, infused the celebration with historic resonance, charting the song's journey from a rallying cry in India's freedom movement to a symbol of collective national identity. The dancers performed before distinguished guests, including President Draupadi Murmu and visiting dignitaries such as European Council President Antonio Costa and European Commission President Ursula von der Leyen, as the parade underscored both India's heritage and its contemporary diplomatic ties. और एसएसबी का संयुक्त प्रदर्शन अभिवादन सहायक कमांडेंट सीमा नाग और सहायक कमांडेंट नवीन कुमारी। The salutation going past the saluting base. Absolutely amazing to see the ability of the human being to master the laws of physics, to come together with complete dexterity, precisely co-balanced formations. And this is the one-wheel riding Constable Saji KS of the SSB moves forward with courage and composure. A light breeze catching the flags, but definitely not throwing anybody off balance. Approaching the saluting base, we have the Sarvatra Suraksha formation. एसएसबी की निरीक्षक शहनाज अपने 18 साथी जवानों के साथ, सीआरपीएफ की कांस्टेबल सीमा पुंडीर अपने 11 जवानों के साथ सर्वत्र सुरक्षा की फॉर्मेशन में। गरुड़ के पीछे वायु कांस्टेबल रीना मलिक सीआरपीएफ अपने 6 अन्य साथी जवानों के साथ और कांस्टेबल शालिना सचेत एसएसबी अपने 6 अन्य साथी जवानों के साथ वातावरण में प्रदूषण को रोकने के लिए ये संदेश जन जन तक पहुंचाती हुई। And now this formation saying what it means, concentration. Constable Sheikh Kajal of the CRPF
along with 11 comrades rolling down Kartavya Path, butterfly formation, patience. The death toll from the devastating Gul Plaza fire in Karachi has climbed up to 73, with authorities stating that the search and recovery operation of the site is nearing completion. The massive blaze, described as Karachi's worst commercial fire in more than a decade, broke out on January 17th and quickly engulfed the multi-story Gul Plaza shopping complex. The building housed nearly 1,200 small, family-run shops dealing with wedding and the wedding garments, toys, crockery and other consumer goods. Deputy Commissioner Saud Javed Nabi Khosa said that the search operation is almost complete and that the fire-damaged building will be sealed on January 26. He added that the authorities are making final effort to trace missing individuals. Province details on the identification process. Khosa said DNA verification remains incomplete in several cases. 13 missing persons are yet to be matched because their families have not provided DNA samples. So far, DNA matching has been completed for 23 individuals. Among the 73 deceased, 23 have been identified. Khosa also urged the public to avoid entering the unsafe structure, warning of potential hazards. Meanwhile, SSP City Arif Aziz said investigations are ongoing, with statements being recorded from all concerned. We'll now take a short break. माघ मेले की भव्यता और पवित्रता का एक बार फिर विश्व देखेगा नया स्वरूप। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए परंपराएं वही और सुविधाएं नई, जहां पग पग पर आस्था और दिव्यता की मिलेगी अनुभूति। जब संगम की रेती पर संत महात्माओं की होगी उपस्थिति, 6 पावन पर्व स्नानों में अखाड़ों के संतों का समागम, पूरे विश्व में माघ मेले की महानता का होगा वर्णन। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माघ मेला 2026 आस्था की लहराती पताका, विकास की नई गाथा, काम दमदार, डबल इंजन सरकार। Gauri balpa kiniga dongor hoi jane bole monase. Gauri kane spunky kuigina dana introduce kriasi. Kuntu balpa saigina gauri ge nutrition digina dongor banabule nimide ola lagasi. Itu do versus Didi Poultry Khatkati Karbi Anglong Sam kuntu check ke do sorde ase tade pai jabo. Welcome back, viewers. The death toll from a devastating landslide in Indonesia's West Java province increased to 17 on Monday, according to the country's disaster mitigation agency. The landslide, which struck a residential area in Bandung Barat region early Saturday, was triggered by heavy rainfall that began the day prior. Weather warnings indicate the rain could persist in the province and other regions for another week. The village of Pasir Lango, impacted heavily by the landslide, is located in the hilly terrain around 100 kilometers southeast of the Indonesian capital, Jakarta. The disaster buried more than 30 homes, and as an agency spokesperson Abdul Muhari reported, at least 17 people have died while 73 remain missing. Search and rescue operations have faced challenges due to another smaller landslide and adverse weather conditions, necessitating the use of drones and heavy machinery. The incident follows the tragic cyclone-induced floods and landslide in Sumatra, with 2 months earlier, which resulted in the loss of 1,200 lives and the displacement of over 1 million residents. Former state government health advisor and infectious disease specialist
Allahu Akbar, ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ieu teh bumi hungkul. Ieu teh aya kirang langkung 12 bumi mah. Di Bapak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Komandan. Mohon izin melaporkan, kami sedang berkoordinasi dengan masyarakat setempat, perangkat masyarakat setempat. Dilaporkan longsoran besar, Komandan, menimbun beberapa rumah. Laporkan buat Desa Pasir Langu 15 bumi RW 11. Former state government health advisor in infectious disease specialist Dr. Sayan Chakraborty has clarified that the situation regarding the Nipah virus, stating that only 2 confirmed cases have been reported so far. He dismissed media reports claiming 5 cases as incorrect, explaining that those additional cases were only suspected and later tested negative. Dr. Chakraborty said the suspected patients had been admitted to Belaghat ID hospital as precaution, but all of them have been since discharged. He added that no new cases have been detected till now and the situation is being closely monitored. एक घंटा पहले का अपडेट मिला था, उसमें बोला गया है कि ऐसे 2 केसेस ही हैं। कुछ खबरें ऐसे आई थी कि जहाँ पे बोला गया कि 5 केसेस है, वैसा नहीं है। कुछ सस्पेक्टेड केसेस थे जो हम लोग के जो बेलेघाटा आईडी हॉस्पिटल है वहाँ पे पेशेंट्स को एडमिट किया गया था, उनका टेस्ट करके सब नेगेटिव आया था और वो सारे मरीज जो है ऑलरेडी अभी डिस्चार्ज हो भी चुके हैं। तो जो 2 केस पहले मिले थे जो कि एक बारासात के एक हॉस्पिटल में एडमिटेड है, वो अभी भी एडमिटेड है वहाँ पे, और बस वो 2 ही केस है, अभी और कोई केस ऐसा नहीं मिला है। तो अगर बोले कि सिचुएशन लाइक टेंशन वाली है, लोगों को किस तरह से अलर्ट रहना है, तो वो क्या कंडीशन है? पहले जैसा लग रहा था कि केसेस बढ़ सकते हैं, वैसा कुछ हुआ नहीं है। तो सरकार ने अच्छा काम किया है, सारा जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया है, सबको क्वारंटाइन करना, टेस्टिंग करना, सब कुछ अच्छे से किया है। तो जो पैनिक वाला जो मोड था वो अभी वैसा नहीं है, और जो सतर्कता के बारे में जो बताया गया था वो सारे चीज़ लोगों ने फॉलो किए हैं, और वैसा देखा जाए तो अभी केसेस बड़े नहीं है, वो सबसे अच्छी बात है। तो उतना पैनिक करने का भी जरूरत नहीं है कुछ। और लाइक जैसे कोविड के टाइम पे क्वारंटाइन पीरियड होता था, नीपा के लिए वो पीरियड कैसा है, और क्या घर में रह सकते हैं या हॉस्पिटल में, वो क्या कंडीशन है? कोविड का जैसे क्वारंटाइन जो पीरियड था कम था, अभी नीपा के लिए बोलते हैं कि 21 दिन का क्वारंटाइन पीरियड होता है, और क्वारंटाइन सिर्फ उन्हीं को रखा जाता है जो किसी मरीज के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए हैं। मोस्टली जो होता है कि जो मरीज के घर वाले होते हैं या फिर जो हॉस्पिटल में जो काम कर रहे हैं, जो मरीज का जिन्होंने केयर किया था, उन लोगों को ही कांटेक्ट करके उनको क्वारंटाइन किया जाता है और उनको घर पे ही रखा जाता है कि 21 दिन आप घर पे रहिए, कोई भी सिम्टम होता है तो सीधा हॉस्पिटल में आके एडमिट हो जाइए और उसके बाद टेस्ट करके बाकी का आगे ट्रीटमेंट करते हैं। क्या सिम्टम्स है नीपा वायरस के, लाइक नॉर्मल फीवर, या कैसे पता चलेगा कि ये नीपा है? तो ये स्टार्ट होता है नॉर्मल वायरल फीवर जैसा, जैसे कि बुखार होता है, बहुत सर दर्द होता है, पूरे शरीर में बहुत दर्द होता है, साथ में गले में दर्द होता है, खांसी होती है, खांसी से निमोनिया जैसा बनता है, सांस में दिक्कत होती है, फिर धीरे धीरे ब्रेन में इन्फेक्शन जाता है, वो ब्रेन में इन्फेक्शन जाते हैं, लोगों का सेंस कम हो जाता है, इवेंचुअली कोमा में जाते हैं। तो नॉर्मल लोगों के लिए तो अभी जैसे अभी सर्दी खांसी जुकाम का सीजन चल रहा है, बुखार आ रहा है, तो उसमें डरने वाली बात नहीं है। किसी के साथ कांटेक्ट हो, वो कांटेक्ट का जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड में जैसे कि आप कांटेक्ट नहीं भी हो, रास्ते में चल रहे हैं, कोई छींक रहा है, कोई खांस रहा है, तो उससे हो सकता है। नीपा ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए उतना नहीं। सर्दी खांसी जुकाम हो सकता है, अगर सांस में दिक्कत हो रही है और सेंस कम हो रहा है, इसमें डेफिनेटली एक नीपा जैसा एक सिम्टम है। ये डेथ रेट की बात करें तो क्या सिचुएशन है यहाँ पर? यहाँ पे अगर सिचुएशन की बात करें तो अभी तक डेथ नहीं हुए हैं, दोनों मरीज अभी भी हैं, उनमें से एक मरीज काफ़ी बेहतर है, उनका चांस है कि वो डिस्चार्ज भी हो जाए, और दूसरे जो मरीज हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो डेथ रेट बोले तो अभी तक डेथ हुआ नहीं है। एज सच में डेथ रेट जो है 40 to 80% जैसा डेथ है, जो कोविड में बहुत कम था, लेस देन 2% था, इसका अप टू 80% तक डेथ है, तो बहुत ज़्यादा है इसका। अगर हम लोग एज की बात करें तो कौन से एज को ज़्यादा इफेक्ट करता है नीपा, या जल्दी वो उनको अपने इन्फ्लुएंस में ले लेता है?
मोस्टली जो मिडिल एज ग्रुप जो रहते हैं उन्हीं का होने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये स्प्रेड करता है जो वो खजूर का जो रस होता है उससे सबसे ज़्यादा स्प्रेड होता है, क्योंकि जो बैट्स होते हैं, चमगादड़ होते हैं, वो भी वो रस खाते हैं और हम लोग भी वो जो रस होता है उसको डायरेक्टली पीते हैं उसको, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गर्म करके या उबाल के नहीं पीते हैं। तो ये नॉर्मली मिडिल एज के लोग ही पीते हैं, एकदम बच्चे भी नहीं पीते हैं और ज़्यादा जो बूढ़े लोग होते हैं वो लोग भी नहीं पीते हैं। तो इन्हीं लोगों में होने का चांस ज्यादा रहता है। क्या क्या क्वेश्चन होने चाहिए कि लोग उससे बच सकें? मेन बात है कि वो खजूर का जो रस होता है वो ना पिए, एटलीस्ट अभी तो नहीं पिए। और उससे जो गुड़ बनता है वो खा सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गर्म जगह पे उसको उबाला जाता है और उसको एक्चुअल में कुक किया जाता है। तो जो जो बिना कुक किया हुआ जो रस है उसको ना पिए। और जो घर में जिन लोगों के जैसे पेड़ पौधे रहते हैं जिसके फल होते हैं, अगर कोई ऐसा फल आपको दिखे जो कि किसी ने खाया हुआ है, जो नॉर्मली कोई पक्षी खाता है या फिर कोई चमगादड़ ने खाया, तो उसको डिस्कार्ड कर दें, उसको ना खाएं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो स्ट्रीट में कटे हुए फ्रूट्स मिलते हैं, क्या वो उसे भी अवॉइड करना चाहिए? उससे नीपा तो नहीं होगा। कटे हुए फ्रूट्स अगर अच्छे से धो के अगर खाया जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे से धोना पड़ेगा उसको काटने के पहले। आपका एक बार पूरा नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर शाहिन चक्रवर्ती, मैं कंसल्टेंट इन्फेक्शियस डिजीज, मणिपाल हॉस्पिटल, ढाकुरिया से। वेस्ट बंगाल के आप एडवाइजर भी रहे हैं। A long-awaited celebration of democracy unfolded today in Chhattisgarh's Bastar region, which for decades remained in the grip of left-wing extremism. In a historic moment, 47 villages across the districts of Bijapur, Narayanpur and Sukma, where national festivals could never be celebrated earlier, observed Republic Day for the first time on January 26. The occasion marks a significant milestone in the democratic restoration of Bastar over the past 2 years. The security situation in region has improved considerably due to a coordinated strategy by central and state governments, sustained operations by security forces and growing cooperation from local communities. As part of these efforts, 59 new security camps have been established in MOIS-affected areas, ensuring a permanent administrative and security presence. Last year, Republic Day celebrations were held in 53 villages. This year, 47 more villages have joined the democratic tradition. For the first time, the tricolour was unfurled in these villages, with local residents participating enthusiastically in Republic Day ceremonies. Areas once considered too risky for national celebrations witnessed villagers voluntarily coming forward to take part in democratic events. More than 100 security camps are now operational across the Bastar region. Beyond strengthening security, their presence has paved the way for development. Basic facilities such as roads, schools, healthcare services, communication networks and banking area are gradually reaching remote villages. The recent resumption of banking services in the most affected Jagargunda area reflects their positive transformation. The tricolour unfurled in these 47 villages on January 26 stands as a powerful symbol of peace, democracy and a new beginning for Bastar. Unidentified miscreants allegedly vandalized the idol of Lord Shani at temple in Chakmaghat under Talyamura subdivision of Tripura, triggering tension among local residents, police sources said on Saturday. The incident took place at the Shahani temple located near Metirai Riangbari Higher Secondary School in Krishnapur Assembly constituency. According to locals, the miscreants struck during the late hours of Friday night and damaged the idol, breaking its hands and fingers. The vandalism came to light on Saturday morning when residents arrived at the temple and found the idol damaged. The incident sparked resentment among the local people and news of vandalism quickly spread, leading to unrest in the area. Some residents alleged that the act was deliberate and intended to hurt religious sentiments, claiming that it could have been driven by communal provocation or political motives. However, the identity of those involved and the motive behind the incident remains unclear. Locals have demanded immediate identification and strict punishment of those responsible. They also called for a thorough investigation and enhanced security at religious places to prevent recurrence of such incidents. Police said that they have been informed about the incident and that necessary steps would be taken to maintain peace and order in the area. Further details are awaited as investigations continue. বাঁশরী যে একটা শনি মন্দির,
এই শনি মন্দিরের মধ্যে রাত্রেবেলা কে বা কাহারা এই মন্দিরের এই শনির হাতটা সব ভাঙ্গা টিঙ্গা ভালো লাগে। সকালবেলা আমরা ওইটা দিই যে শনি হাতটা কিছু নাই। কবে দেখছেন আপনারা এটা? এটা গতকালকে, আজকে সকালবেলা গতকালকে রাত্রে হয়েছে সম্ভবত। কি মনে করতেছেন যে এই যে এরকম ঘটনা কারা করতে পারে? এটা তো এরকম কিছু বুঝতেছি না, কিন্তু আমার মনে হইতেছে হইলে ডাক্স পার্টি হইব, আর নইলে অন্য কিছু হইতে পারে, কিন্তু ডাক্স পার্টি খুব সম্ভব। কি করবেন বিষয়টা নিয়ে যে হিন্দু সনাতন ধর্মের দেবদেবীর মূর্তিগুলা ভাঙা হইতেছে? এটা তো মারাত্মক ব্যাপার, কারণ হিন্দু সনাতন ধর্মের উপরে এরকম ভাবে আঘাত হইতেছে। লেগে তো আপনার এটা কেন হইল যে এটা সনাতন ধর্মের উপরে এরকম ভাবে আঘাত হইতেছে, এটা কি ব্যাপার? এর আগেও নাকি একবার এরকম একটা ঘটনা হয়েছে? আগে হয়েছে একবার। এই বিষয়ে মূর্তির কি কি ভাঙছে? মূর্তির হাত ভাঙছে, হাতের আঙ্গুল ভাঙছে, অথচ এটার মধ্যে রড টট লাগাই, এরপরে তো এটা ভাঙছে বাইরে। স্থাপিত মূর্তি? হ্যাঁ, স্থাপিত মূর্তি। That's all for now. Thank you for watching Hornbill TV.